नमस्ते, सायंकालीन सत्र में आपका स्वागत है। सायंकालीन वंदना, अर्पणा एवं प्रारंभिक वंदना। वे जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, धम्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, उन भगवान बुद्ध, धम्म और संघ की हम यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। आदर पूर्वक दी गई यह तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करें। हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, उन भगवान बुद्ध का मैं अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, उस धम्म को मैं नमन करता हूँ। भगवान के श्रावक संघ, जिन्होंने मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित किया, उस संघ को मैं नमन करता हूँ। आए हम भगवान बुद्ध की प्रारंभिक वंदना करें। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। आए हम भगवान बुद्ध का अनुस्मरण करें। भगवान बुद्ध की अच्छी कीर्ति इस प्रकार फैली है। ऐसे है भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध, ज्ञान और आचरण से संपन्न, सुगत एवं लोक ज्ञाता, भटके हुए मनुष्यों को संयमित करने वाले अनुपम सारथी, देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध। आए हम भगवान बुद्ध के गुणों का पाठ करें। भगवान बुद्ध जो श्रेष्ठ अरहंत है, उत्तम गुणों से युक्त है, शुद्धता, अति उत्तम प्रज्ञा एवं करुणा के पुंज हैं, जो समझदार मनुष्यों की बुद्धि जगाते हैं, जैसे सूर्य कमल को खिला देता है। उन अहिंसक जिनका मैं सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध जो सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित शरण है, मैं पहली अनुस्मृति के रूप में उनका सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। मैं भगवान बुद्ध का दास हूँ और बुद्ध मेरे शास्ता हैं। मैं भगवान बुद्ध को यह शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ। मैं श्रद्धा पूर्वक भगवान द्वारा बताए गए बोधि के मार्ग पर चलूंगा। मेरी कोई और शरण नहीं है। भगवान बुद्ध ही मेरी श्रेष्ठ शरण है।
इस सत्य वचन के प्रभाव से शास्त्रा की शिक्षा में मेरी प्रगति हो। भगवान बुद्ध की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने भगवान बुद्ध के प्रति दुष्कृत्य किए, भगवान उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। आए हम धम्म का अनुस्मरण करें। जो धम्म भगवान ने अच्छी तरह समझाया, यही स्पष्ट दिखता है, कालातीत है, अन्वेषणा को प्रोत्साहित करता है, अंतर्मुखी करता है, प्रत्येक प्रज्ञावान को व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है। आए हम धर्म के महान गुणों का पाठ करें। भली प्रकार से समझाया गया ये धम्म सर्वश्रेष्ठ है, जिसके मार्ग और फल, परियति और मोक्ष दो आयाम है। जो धम्म को धारण करते हैं, उन्हें नीचे लोकों में गिरने से बचाता है। अंधकार हटाने वाले इस श्रेष्ठ धम्म की मैं वंदना करता हूँ। धम्म जो सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित शरण है, दूसरी अनुस्मृति के रूप में सिर झुकाकर मैं उसका वंदन करता हूँ। मैं धम्म का दास हूँ और धम्म मेरा श्रेष्ठ स्वामी है। धम्म को मैं अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ। धम्म की वंदना करते हुए मैं धम्म के श्रेष्ठ मार्ग पर चलूंगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, धम्म ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से शास्त्रा की शिक्षा में मेरी प्रगति हो। धम्म की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने धम्म के प्रति दुष्कृत्य किए, धम्म उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। आए हम संघ का अनुस्मरण करें। धर्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धर्म के मार्ग को सीधे प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धर्म के मार्ग को ज्ञानपूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, धर्म के मार्ग को निष्ठापूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, जो हैं चार युगल और 8 प्रकार के आर्य, ये हैं भगवान के श्रावक संघ। ये हैं भेंट देने योग्य, आतिथ्य के योग्य, दक्षिणा देने के योग्य और नमस्कार के योग्य, इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र। आए हम संघ के महान गुणों का पाठ करें। सद्धर्म से उत्पन्न सद्गुणों से युक्त संघ इस मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करता है। जो 8 आर्यों का श्रेष्ठ संघ है, जिनकी काया और चित्त शील आदि धर्म से युक्त है, उस शुद्ध आर्य संघ का मैं वंदन करता हूँ। जो संघ सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित शरण है, तीसरी अनुस्मृति के रूप में मैं उस संघ को सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। मैं संघ का दास हूँ और संघ मेरे श्रेष्ठ स्वामी हैं। मैं संघ को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और संघ की वंदना करते हुए
उनके द्वारा अच्छी तरह प्रतिपादित मार्ग पर चलूंगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, संग ही मेरी श्रेष्ठ शरण है। मेरे इस सत्य वचन के प्रभाव से मैं शास्त्रा की शिक्षा में आगे बढ़ूं। संघ की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने संघ के प्रति दुष्कृत्य किए, संघ उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। आगे की इंस्ट्रक्शन के लिए सर आपसे निवेदन है। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, हम सुन पा रहे हैं। तो हम आज से शुरू करेंगे अपने जो छठी इंद्रिय रह गई है उसके बारे में, जो हमारे आसक्तियां हैं उनके थॉट्स के बारे में लाइक टू। से बाकी इंद्रियों पे हमने किया, उनका जो स्पर्श है वो धम्म है, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स। अब थॉट्स तो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी होते हैं, but that you already considered. We've taken all the sensory objects. सारी पांचों इंद्रियां के ऊपर चर्चा हो चुकी है. So we'll only consider जो pure thought processes which are not a kind of recognition of objects or sounds or smell, but basic concepts and philosophies, समझ में ठीक certain कहा belief नहीं जा रहा। systems. उसके बारे में सर थोड़ा ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहे हैं, आपका सिग्नल थोड़ा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा आवाज रुकती है। आप मेरे ख्याल में वीडियो बंद करके खाली I'm in the car. ये तो बंद ही है। वीडियो बंद है सर। So what I'm saying is that we'll start investigating our attachments to various concepts, philosophies, your thought processes, belief systems. For example, the belief that there should be justice in the society, belief that communism is the best form of government, or the democracy, or whatever, or my religion is the best, others are worst, and similar such kind of things which don't have a basis in any five senses, but in the basic thought process. और के प्रति attachment कई बार sensory attachment से भी strong, suffering for a very long concepts which I find so difficult to kind of look at them purely equanimity without getting attached to them, and those concepts are challenged. For example, that our country should remain and it should not get destroyed. This civilization is very good and this civilization should not get destroyed. And recently, I say, Sanatan should be finished. Those kind of thoughts may somebody may seem but if I am attached to that kind of a philosophy, that kind of a belief system, then such statements cause a lot of hurt. And so we need to really see what can we do about reducing our attachment to these thoughts, these concepts, however nice they may be, however wonderful they may be. Yeah? So that becomes very difficult. You know that this thought process is good for the society, good for me, and yet attachment to them causes suffering.
That's what we'll like to investigate in the next few days. So, as usual, we'll begin with keeping quiet for some time, collecting our mind, and then investigate. Investigate whatever strong sankharas we have with respect to the dhamma. And the interaction here will be mano and dhamma. Mano sampassaya vedana. The vedana which arises when मन में कोई हम थॉट आता है, विचार आता है मन में, और उसके कारण जो वेदना जागती है और उस वेदना के प्रति जो कृष्णा जागती है. That's what we want to investigate in the next few days. And in many cases, it is, at least in my case, some of them are pretty strong and I've been working on them for a very long time. कुछ काम हो गए हैं, but I can't say that they are really not there. So I'm sure each one of us would have something of that kind. And then we can investigate and try to see how we can reduce the intensity of attachment to that based on the teachings of the Buddha. Since I'm traveling, therefore I'm giving the instructions first and leaving for you to decide how much time you want to spend on samadhi, so that the mind is collected, and then you can work on that. You can work on the thought process and see this is the thought process with which I am very strongly attached, and as a result, I periodically keep on suffering. Then we can investigate why am I attached, and as we have done everywhere, first see the attachment, that event which caused the attachment to manifest, be remembered, and we see the suffering it caused to us. Just बाकी इंद्रियों के द्वारा पे किया था, बिल्कुल same process we adopt with respect to thoughts. That's my request for you. So we can continue till 8:15. Then at 8:15 I'll try. I'm traveling in the car, so I just combine the instructions of both the parts. At 8:15 I'll join again, and then we can have a discussion. Or maybe 8:10. Today being the first day, you may have a number of comments. Is that okay, Nikhil? Sir, actually, as I could listen and I could see the comments also, Is it आपने बोला clear? कि हम क्या करना सर है? आप सर are you able to listen sir? हाँ, मैं सुन रहा हूँ. हाँ सर, एक्चुअली मैं इधर कमेंट भी देख रहा हूँ, तो रेंदर जी ने लिखा है कि जब आप इसको मंडे मॉर्निंग को बताएं तो हमें फिर से फ्रेश तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दें, क्योंकि ये थोड़ी हाँ. आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है. हाँ, ठीक है. आपको क्या सुनाई दिया, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ. हाँ, मेरे आपने को सर ये जो सुनाई सुना दिया. है वो बता दीजिए. जी सर, मेरे को आपने जो संक्षेप में मैं बताता हूँ. हमें शुरू में आनापान सति का अभ्यास करना है, पहले 20 मिनट. उसके बाद हम मन और मन के विषयों के ऊपर देखेंगे कि जो विचार आ रहे हैं, वो कोई विचार हमें क्यों परेशान कर रहे हैं या हम किस विचार से ज्यादा चिपकाव कर रहे हैं. कौन से विचार कह रहा हूँ मैं, आपने सुना नहीं. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई देश के बारे में विचार आ रहा है कि ये देश या लोकतंत्र, या आपने देश के बारे में चर्चा किया सर कि ये देश ऐसा क्यों है. और भी तो की थी. Concept. Yeah, we are talking of various concepts, various belief systems with which we are strongly attached. It could be about country, it could be about religion, it could be about various forms of government, it could be about various philosophies, communism, democracy, or kings, and so on. Each one of us has some strong concept with which we are attached. They are the ones which we want to investigate. It's not any thought which comes and we start. We're not doing that. We are recalling any concept with which we are strongly attached, and then bringing it to the memory whenever we felt hurt because of that concept being challenged or being seen to be under threat. Our country is under threat, our terrorism, or for people like Rajendra ji and me, what has happened in Kashmir has remained as a
kind of a painful thing, memory, and the fact that this should happen, this should not happen, there should be justice in the society, and we don't see justice in the society, and you suffer. Government officers should work in time, and they don't, and we suffer. And these are all concepts we have. So we are not taking any sundry thought. We are not doing that. I'm not saying that, because that's not the objective here. We are doing specific analysis of the sixth sense, which is the mano and dhamma. Mano sampasaya vedana. That is it. And it's a dhamma tanha. Krishna which arises based on dhamma, based on concepts, based on thoughts, certain belief systems, certain philosophies with which we are attached. Okay? Is this clear? Now, Yes, sir. थोड़ा बता दो फिर से. नहीं, अब क्लियर है. Now it is very clear. आवाज साफ थी? हाँ, बिल्कुल साफ थी और अच्छी तरह समझ में आ Okay. सर बस एक चीज पूछनी थी. Kindly do that and then हाँ बोलिए. सर ये जो कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा इंटेंशनली लाना है कि अपने आप से जो है? हाँ, of course, intentionally, of course. जैसे हम बाकी इंद्रियों पे कर रहे थे कि मुझे इस piece of music से attachment है, then we remembered it and saw it, and then we saw कि ऐसे प्रति बहुत नफरत है, इस मनुष्य के प्रति बहुत नफरत है मुझे. Then we remembered him, our interaction, and then we felt that the aversion towards that person in the body. Then we felt it in the mind, allowed it to cease, and then try to calm down the mind, and then after calming down the mind, then investigated what is the cause of this attachment and try to understand that. जैसे हमने बाकी इंद्रियों पे किया, exactly same thing. Sure. We do about with respect to concepts. Okay. Thank you. Anybody else? If it is not clear, please ask, so that you don't have to waste time. And you can do anapan for as much time as is necessary. We are now, I think we have done it so much that we should be able to decide, yeah, mind is quite enough, and let me just investigate. Because investing in that is very tough. Investigating thoughts and finding out why I am attached. This question, for example, if I say this statement, there should be justice in the society, is also a thought, and we are attached to it, and we suffer if we find injustice going on. This seems very funny to say that this is something which is causing me suffering, but it is. So this is more subtle than the material senses. So you need a lot of reflection. सर, तो जो प्राइमरी थॉट उठे, जो ज्यादा रेकरेंट उठे, उसे इन्वेस्टिगेट करना है, ये करना है ना? बिल्कुल. या जैसे किसी के साथ नेशनलिज्म का बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है, then we investigate. अगर why am I, for example, why am I so much averse to Pakistan? Let me just give an example. Why am I so averse to them? And why am I averse to terrorism? Terrorism is bad. Of course, everybody will agree with it. So then if terrorism happens, then I get sad, I get upset, I get angry, I suffer, isn't it? So we investigate, kya chakkar hai? Why am I suffering? Where exactly is the problem? And it's going to be more difficult to identify, because what you are identifying is attachment to something which is noble. So it's going to be, quite a challenge. I have been grappling with it for many years actually, and got some insight into it. Kya hota hai. But it will be very challenging, I can sure. But please, have you got what I am trying to say? हाँ जी, आ गया, समझ में आ गया. समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आ गया सर. ये था कि That is two. ये insensitive Let us sit and quietly and now do this. राजेंद्र जी कुछ, calm down the mind and then investigate. हाँ बोलिए. राजेंद्र जी का कोई क्वेश्चन है? ये जो
हम जैसे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम एक इंसेंसिटिविटी को काफी, मतलब हम विल ट्राई टू नॉट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स व्हाटएवर इज. No, that's not correct. Please do it and see. No, it doesn't mean that. चलो It देखते means we put it in the light of attachment to nobility, attachment to Buddha, attachment to Buddhism. Yeah, that also can cause of suffering because we don't understand what attachment is. So attachment to monastery, that's big suffering if you are attached. But aversion towards terrorism is not an attachment to terrorism. No? Yeah, it is aversion. ना ये आपने शब्द यूज किया ना. Aversion है, yeah, that's right. It makes you suffer. If it doesn't, no, the question is not होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. Aversion से अगर मैं suffer कर रहा हूँ, then I need to investigate. I'm not saying terrorism is good or Buddhism is bad or getting a monastery is bad. We are not making that statement. We are making attachment to that. The question is this: aversion to this, aversion to terrorism does not mean we like it. If I say aversion to terrorism is bad, it does not mean good terrorism is good. सर आपका ऑडियो Saying गया. aversion is bad. We don't see terrorism is good. अभी आप traveling ना. अभी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कई आवाज आपकी कट रही है. परसों चर्चा करेंगे. अभी हम वो करते हैं. जो मैंने कहा है करने को आपसे करिए. Don't come to the conclusion just now. It is going to be pretty tough. अगर ये समझ आ गया क्या करना है, kindly do that. Okay. As soon as I am at a place where the signal is strong, around 8:10 or so, I'll contact and stop and talk to you. Okay, thank you very much. Okay, sir.
Yes, friends. I think my signal is better now. Okay. सुन पा रहे हो? हाँ, अभी तो सुन पाया, बीच में थोड़ा सा कटा था वॉइस। नहीं, अभी ठीक है। यस, फाइल जी ने हैंड रेज किया हुआ। हाँ, बोलिए, बोलो बेटा। एक क्वेश्चन है, जैसे एक तो आपने बोला कि रेटिंग स्पॉट है, उसे देखो, उसे फॉलो करें और उससे पता लगता है। एक ये दूसरा मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जैसे हर बारी पता नहीं चलता है कि वो थॉट, वो आइडियोलॉजी या कॉन्सेप्ट या बिलीफ के अगेंस्ट है, इसलिए हो रहा है। क्या हम अपने संस्कार को बैक एडिट करके देख सकते हैं कि गुस्सा है, इरिटेशन है, तो क्यों है, वो इसलिए है the other person is not agreeing with what I think about something. तो क्या उसे बैक एडिट करके भी is that another route that we can follow to decipher this? मेरी आवाज मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। सबको आवाज क्लियर है? मुझे मेरी आवाज क्लियर है? बस क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है आवाज। सुनाई तो दे रहा है बट कुछ वैसा नॉट वेरी क्लियर। अभी क्लियर है? हाँ, अब क्लियर है। अच्छा, ब्रीफली बता दे। कुछ तो मैंने सुन हाँ लिया है, जी, थोड़ा बीच बोल रहा मैं क्वेश्चन ये बोल रही हूँ कि एग्जैक्ट। हाँ, अगर मुझे एकदम नहीं पता लग रहा कि मेरे को कंसेप्चुअली नहीं पता चल रहा मुझे कि ये मेरा कॉन्सेप्ट या बिलीफ या उससे वो है, तो मैं बोल रही हूँ कि क्या मैं संखार को लेके बैक एडिट कर सकती हूँ कि मेरा हाँ। एंगर, मेरी इरिटेशन ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है द अदर पर्सन इज अपोज टू माय थिंकिंग, एंड देन वहां से हो रहा है, तो उसको वो एक रूट फॉलो। Then that is something else. Now we are talking of not of people. We are talking of concepts. We are not talking of हाँ, people. मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हाँ, मे बी आई एम नॉट example. बीइंग एबल टू एक्सप्लेन। जी अभी जी। देयर इज अ नेबर मेरा, वो ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज एवरीथिंग, ही इज जस्ट कम बैक फ्रॉम अब्रॉड, एंड वो आकर ही इज फॉर एवर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इंडिया कि अरे यहाँ पे वो सैलरी स्ट्रक्चर उतना हाई नहीं है, अरे यहाँ पे रोड ऐसी है, अरे यहाँ पे लोग ऐसे हैं, अरे यहाँ पे ये है। तो मेरे लिए उससे पहले वो एक कॉम्पिटेंट एफिशिएंट डॉक्टर था, ठीक ठाक इंसान था, वो सब था, इससे पहले ठीक चल रहा था, बट देन ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग सो मच अबाउट द कंट्री कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यहाँ ये नहीं है। अभी मुझे उसकी वो तो गुस्सा है ही मुझे कि उस आदमी के पानी पे थोड़ा गुस्सा है ना, उस आदमी की शक्ल पे गुस्सा है, उस आदमी के जो विचार हैं। नहीं, मुझे अब उसकी हर चीज पे गुस्सा चल रहा है। मुझे वो तो हो जाएगा ना, वो तो हो जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो तुमने प्रोलिफरेशन कर दिया ना इस केस में। मैं कहूंगा कि फंडामेंटली इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द फैक्ट that he is criticizing India and you don't like it. I don't like it at all. Fine, simple. Stop there. No. Therefore, it is because of your attachment to the concept called India. Yeah, so this is a attachment to a concept. India is just a concept. it is. मगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं वो संखार, इरिटेशन के संखार को बैक एडिट करके यहाँ पे आ रही हूँ, rather than recurrent thought को लेकर। It's not a question of now. It's not a question of same thought. It is the question of same concept. There may be so many other different examples where anybody criticizing India on some account and you get irritated. So the result of all that, the focal point of all that is attachment to country, attachment to concept called India. Now it's so difficult. It's so difficult to give up because we have to investigate kya ho raha hai? What is India? What am I looking for? And why am I getting angry on that? So that needs silent investigation.
ये तो एग्जाम्पल तो बिल्कुल उसी का किया ना, इट्स जस्ट ए कॉन्सेप्ट. हाँ मैं मगर हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि बट मैं सोच के कि मैंने वहां थॉट रेकरेंट से नहीं पहुंची, मैं इससे पहुंची है वो ठीक है कॉन्सेप्ट ही. हाँ बस ठीक है, दैट डजंट मैटर. वो क्वेश्चन इज इट इज ए कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट. नाउ उसके अब आगे मैं इसको प्रोलिफरेशन आगे होने क्या से करना, आगे क्या करना, सो क्योंकि प्रोलिफरेशन तो है. अब हाँ, मुझे सो यू उसकी लीव दैट, कॉम्पिटेंसी एज ए उसको लीव डॉक्टर में हाँ भी क्वेश्चन लीव उठ दैट. गया. Yeah, हाँ that's all proliferation. उसको leave करो हाँ यार. जी. For this हाँ purpose, now you investigate that if is India a reality or is it a concept? And why do I have so much get angry if somebody criticizes it? So you investigate it, find out. There's an attachment to a concept called India. Let's see. Look at that in that dispassionate manner. What are the points which are being criticized? And you can see, yeah, there are, of course, there may be some truth in them. So why are we getting worked up? Firstly, there is obviously an idea at a level of attachment to a concept. And attachment is something. It doesn't mean that we try to become anti-nationals. I'm not saying that. हाँ नहीं वो मुझे बट मुझे ये Attachment, हाँ attachment ये is जो an attachment. Attachment to anything. Attachment to a noble concept is also suffering. That is a very difficult thing to digest. And we can always get wrong conclusions from there. It's not the idea. We are not saying India is good or bad. We are not making any judgment. That is a different field of inquiry. The question is, I am attached to this concept and it is causing me suffering. True. Yes. So we investigate, why is this attachment? Why? And can I drop it? Because second noble truth is to find the cause of suffering. Third noble truth is drop that attachment, drop that Krishna. Now say, can I drop that or not? If I'm not able to drop, what is the problem? No, so why am I attached? Because I'm attached to my perception about a certain thing. How do I? Firstly, you're attached to a concept called Make India. It's a concept. अच्छा नहीं आपने अभी बोला ना why am I attached? मैं पूछ रही हूँ वो कैसे करूँ? Why am I not able to drop it? That is the third thing. Na? Third noble truth says attachment should be dropped. Anha should be dropped. I find that I am not able to drop it. Then I have to investigate. Why am I not able to drop it? Okay. Then that is where the investigation begins. How do we begin? We just calm down the mind, practice, calm down the mind, and put that question into our psyche and wait for an answer to come. Wait. You will get an answer. More you are calm and more you investigate, you'll get an answer. You may find it difficult, then try it again. So, and some questions we're so strongly attached to some concepts that answers just don't emerge so quickly. And we easily then try to say, अगर मैं attached नहीं हूँ इंडिया को तो इसका मतलब मैं तो international हो गया. ये है तो संसार ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा. Mind can get into all kind of proliferation. Attachment के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता. Obviously, there is a possibility of misunderstanding. One has to see. So the only touchstone we can apply is sati and panya should be used. Why am I not able to live according to sati and panya? That is where some hope lies. Exactly same way as we did with persons, as we did with sounds, as we did with food, smells, everywhere we did the same thing. टच पे तो इतना हमने किया, वहां पे हमने देखा टच में तो भाई बहुत ही मुश्किल है, तो हमने कहा कि एंटीडोट लगाओ, चलो अशुभ शन्या पे काम करो. Here also we work in exactly the same way,
and try to find out कि अटैचमेंट ड्रॉप हो रही है, कोशिश करते हैं, नहीं हो रही, अच्छा देखते हैं क्यों नहीं हो रही, क्या उसके पीछे कोई और गहरा परसेप्शनल इल्यूजन है कोई हमारा, फाइंड आउट। ओके सर, मगर ऐसे जैसे और जो थॉट और बिलीफ है या और कॉन्सेप्ट जिसका मेरी अटैचमेंट है, बट उसमें मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे राइट है इसमें बिलीव करने का, उसे राइट इक्वल राइट है उसमें बिलीव करने का। गुड बट जब गुड इस पे जब बात आती है, यहाँ पे मेरे को कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। मैंने so ये attachment is stronger, isn't it? So this आपकी ये बात अच्छा से क्लियर बनता है कि हाँ मेरी अटैचमेंट इससे बहुत स्ट्रांग है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अच्छा अच्छा isn't that? That is the अच्छा, case. हाँ 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 Yeah, हाँ, that's it. इसमें So कोई you, स्कोप नहीं है। yeah, हाँ हाँ yeah. हाँ, या So then we राइट। investigate यार ऐसा क्या हो गया, why so much grasping of this? It's quite tough, I know, I don't deny that, it's quite tough. It seems so normal and so natural. That's why I said attachment to noble concepts, noble thoughts is so strong and so justifiable. बहुत मुश्किल हो जाती है इसको देख पाना, क्योंकि उसको छोड़ने का हम इमेजिन करने लगते हैं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। That's the way we usually think. We don't क्या look हो at it कि जाएगी? गड़बड़ क्या हो हो जाएगी ना, जाएगी? अगर मैं ये छोड़ दिया मैंने, इसका मतलब मैं तो I'll start working against the country, I'll start working this, I'll not this, my country will get lost, and there'll be, if everybody thinks like that, what will happen to the country, this, that, you can always keep on proliferating on that. But we are losing sight of the fact that as wise people, we have sati and panya to decide how to act, not attachment. At the moment, our action is guided by attachment. So Buddha tells us that we should be guided by sati and panya, howsoever difficult situation may be. And we'll fail also. There's no problem. We're only learning. गलती हो जाएगी, अटैचमेंट के कारण गड़बड़ रिकवर, हाँ गड़बड़। Next time I'll be more careful. Next time I'll be more careful. That's how we learn. But if you don't recognize the problem, तब तो कुछ चांस नहीं है ना लर्निंग का। हाँ जी, एक्चुअली में मेरे को अभी यही, मैं जब माइंड काम डाउन हुआ तब मैं ये सोच रही थी कि पहले तो सब ठीक था, सडनली मेरे को इतना why am I finding it so irritating any kind of interaction, and इससे पहले तो नहीं था, 2-3 weeks ago तक तो नहीं था, but one wrong statement it colored everything, which means मेरा इतना ज्यादा वो है कि एक चीज सबको बर्बाद कर देता है, माने इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो उसके साथ फिर proliferation होने लगते हैं ना, so everything is seen as to be wrong then. Yeah, good, very good. That's how we have to really investigate and try to get over it to the extent we can. हाँ जी, आपका वॉइस बीच बीच में ब्लैंक हो रहा है सर। हाँ, yeah, that's gone to be. अभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं क्या? अभी आपका वॉइस गाड़ी को रोका हुआ है एक जगह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, Maybe the network is not good or नहीं पहले से बहुत बेटर है। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड, रेंद्र जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है सर। हाँ जी जी। मुझे लगता है कि परसों बात कर लेंगे, क्योंकि अभी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप करिए, बिकॉज मुझे लंबी बात करनी है, तो आई विल पोस्टपोन इट टिल मंडे। ठीक, थैंक यू। राजेंद्र जी, सुबह के सेशन में मत कर लेना, फिर कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। आप म्यूट पे हैं। कल शाम को कर लेंगे। हाँ, कल संडे है।
That's okay, we can do that. Good, thank you very much. So let us do the chanting again. They also will do the chanting dedicated to welfare of Mahapanja's father. भुजंग परिक्र का पाठ कर लेते हैं। भुजंगो सखी संखातो धम्मानुच्चयो तथा वीर्यं इति प्रसद्धि भुजंगा च तथा परे समाधि उपेक्षा भुजंगा सत्य एते शब्दस्ना मुनिना सम्मदख्याता भाविता बहुनी तथा संपत्तन्ति अभिज्ञाय निब्बानाय च बोधिया एतेन सच्चवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा एकस्मिन् समये नाथो मोग्गलानं च कश्यपं गिलाने दुःखिते दिस्वा भोजङ्गे सत्प्रदेशै ते चातं अभिनन्दित्वा रोगामुञ्चिंसुतं खडे एतेन सच्चवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा एकदा धम्मराजापि हेलिन्याभिपीडितो चुण्डथेरेण तमेव बडापेत्वानुसादरम् सम्मोदित्वा च आबाधा तम्हावुत्थासितानसो एतेन सच्चवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा पहीनाते च आबाधा कृण्वन्ति महेशनं मग्ग आहत कुलेशावा पत्तानुपत्तिधम्मतम् एतेन सच्चवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा। बोधि के अंग सती धम्म विचय तथा वीर्य प्रीति प्रशब्दि भी बोधि के अंग हैं और समाधि और उपेक्षा बोधि के अंग हैं। इन सातों का संपूर्ण दर्शन कर मुनिश्रेष्ठ ने अच्छी तरह से बताया, भावित और विकसित किया। विशिष्ट ज्ञान के लिए, निर्वाण और बोधि के लिए इस सत्य वचन के प्रभाव से आपका कल्याण हो। एक समय भगवान ने मोगलान और कश्यप को व्याधि से पीड़ित देख 7 बोधि के अंगों का उपदेश दिया। वे इनका अभिनंदन कर उसी क्षण रोगों से मुक्त हो गए। इस सत्य वचन के प्रभाव से आपका कल्याण हो। एक बार धर्मराजा भी व्याधि से पीड़ित हुए और चुंद नाम के थेर से सादर इनका पाठ कराकर इसका अनुमोदन करते ही वह इस व्याधि से बाहर आ गए। इस सत्य वचन के प्रभाव से आपका कल्याण हो। तीनों महर्षियों को व्याधि से मुक्ति मिली। जैसे धर्म मार्ग के अनुसरण से क्लेशों से मुक्ति, धर्म अनुसार जो भी प्राप्त होना है वह प्राप्त होता है। इस सत्य वचन के प्रभाव से आपका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन
सदा सोऽत्रि भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। Thank you. Thank you very much. Namaskar. See you tomorrow. थैंक यू। टुमारो 6:30 संडे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। Namaskar. Namaskar.